Hello guys, hi. Hope you are doing good and learning and enjoying the process. So this video is about the quiz 2 that I launched a couple of days back. Actually, not a couple of days, a week back. So I try to release at least one quiz every week so that the practice keeps on happening and जो learners हैं उनके लिए भी something to look up to. Quiz होता है तो थोड़ा excitement भी होता है and revision भी होता रहता है. So that this quiz was based on mostly on the concepts of simple interest and compound interest. Okay. And I had explicitly mentioned because key you can use calculator but not AI. So don't. I hope you guys did not use ChatGPT. So the purpose of uh, mentioning that कि आप calculator use कर सकते हैं is that कि a lot of the calculation in these questions cannot be normally done without the help of calculator, or it becomes very difficult without the help of calculator. So that you can use that. I gave that liberty. So I hope you guys have attempted the quiz. If not, please again, questions to hey, pause the video, solve the questions on your own, and you will have a better way of learning. Okay. So without any further ado, let's begin and discuss the solutions. Okay. So the first question says, Aman had invested 4,000 at a rupees 4,000 at a certain rate of interest compounded annually. This is important. So whenever I teach compound interest to students, I always make them read this carefully. Is it compounded annually, semi-annually, or quarterly? Because that defines the rate of interest also. So now, if the ratio of the investment's value after 3 years to its value after 5 years is 25 by 30 is to 36, determine the minimum number of years for the investment to exceed 20,000. Okay. Okay. So in this case, what we can do is assume this P, not assume P तो दे रखा है P which is principal is given, that is rupees 4,000. Okay, and compounded annually, so that's okay. Rate of interest is not given, so let's assume it to be R. Okay. So now the value of this investment after 3 years and 5 years. So value means after 3 years means the amount, this what it will amount to. So A3 is equals to P into 1 plus R by 100 power 3, and A5, which is the value after 5 years, is equals to P times 1 plus R by 100 over 5. It is given, the ratio is given A3 by A5, the value का जो ratio है after 3 years and 5 years is 25 by 36. So just dividing them. So I'll take A5 by A3. Okay. A5 by A3. So you'll get dividing this side. So you will get P plus R by 100 power 5. By the way, this is called dividing the equation. और ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप A5 by A3 की वैल्यू निकालिए, वो ये आएगी, एंड उसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको दे भी रखी, दिस इज इक्वल्स टू 36/25. तो कई बार अगर आप इफ यू हियर कि आई एम डिवाइडिंग द इक्वेशन, डिवाइडिंग बोथ द साइड, सो don't get panicked or overwhelmed. This is the simple expression A5 by A3. You want to, the value is given. So put the value of A5 this, put the value of A3 which is this, and find the and form an expression. Okay. Now in this expression is relation में P से P cancel. This is 5. This is 3. So using the concepts of exponents, so what we'll get is 1 plus R by 100 पावर 2. 5 minus 3 हो जाता है ये, यहाँ पे 5 - 3 हो जाता है. So this becomes 36/25. Now raising power 1 by taking square root both the sides. So this, because what we get is 1 plus R by 100 equals to 6/5.
Further solving it, r by 100 equals to 6 by 5 minus 1. This one will go that side and get a negative sign with it. And subtracting this, taking the LCM, so we get 6 minus 5 by 5, which is 1 by 5. And r comes out, so r by 100 is equals to 1 by 5. This implies r is equals to 20%. ये 100 इस तरफ चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, and 100 by 5 is 20%. So rate of interest we have got 20%. Now what further the question asks is minimum number of years required for the investment to exceed 20,000. So इसके कहने का मतलब है कि कितने साल लगे ताकि जो प्रिंसिपल है दिस बिकम्स टर्न्स इनटू एन अमाउंट्स टू एटलीस्ट 20,000 और 20,000 और अबव, मतलब वी वांट की अमाउंट 20,000 हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए, तो मिनिमम नंबर कितने चाहिए होंगे उसके, मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स कितने चाहिए होंगे उसके. So an I don't know what number of years from here now it will be. This is equals to 20,000. Just a second. So this should be 20,000. Okay. Now, so the expression for this is okay, P into 1 plus R by 100 power n should be greater than equal to, I mean, इसको भी मैं greater than equal to लिखता हूँ, better होगा. Like this. I know the value of P, so putting in the value, I know R also. वो हमने निकाला अभी 20%. And we have to find out. You can cancel the 4,000 से आप 20,000 को कैंसिल कर सकते हैं एंड इसको भी सिंपलीफाई किया जा सकता है. तो दिस इज व्हाट 25 are, so basically this is 1.2. So here what we get is 4,000 into 1.2 power n greater than equal to 20,000. So this implies 1.2 power n greater than equal to 5. अब यहाँ से आप फॉर दिस व्हाट यू कैन डू इज आप दोनों साइड लॉग ले लीजिए. लॉगरिथम का थोड़ा कॉन्सेप्ट आ गया, लगेगा इसमें. तो इफ आई टेक लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, सो आई गेट 1.2. ये n जो पावर होता है उसका वो साइड में आ जाता है. दिस इज द पावर रूल ऑफ लॉगरिथम्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू logarithm of 5. This implies n is greater than equal to log 5 upon log of 1.2. ये आ जाएगा. अब ये वैल्यू यू विल हैव टू कैलकुलेट. इसके लिए कैलकुलेटर चाहिए होगा. तो आई हैव दिस साइंटिफिक कैलकुलेटर, और अदरवाइज आपके मोबाइल में भी आई हैव आईफोन, तो उसमें भी ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो. तो ये दिस कैलकुलेशन फॉर दिस कैलकुलेशन कैलकुलेटर इज अलाउड. इवन एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आता है ऐसा तो सम हिंट टू बी प्रोवाइडेड फॉर अराइविंग एट द आंसर, कुछ वैल्यू दी होगी, बट उससे पहले का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए. ठीक है, दैट इज ऑन यू, दैट यू हैव टू लर्न. तो log 5, ओके, मैं इसमें कैलकुलेट कर लेता हूँ. log of this is 5
Let me just check using this only. Oh, this is log 5 divide log 1.2. So this comes out to be 8 point. So n is greater than equal to 8.827. So n should be approximately equal to or greater than 9. तो मिनिमम 9 years तो चाहिए होंगे इसको 4,000 से 20,000 बनने में. ठीक है. तो दिस इज द आंसर. क्वेश्चन आई हैड मेंशन कि राउंड अप टू द नियरेस्ट इंटीजर. तो 8.82 आ रहा है तो यू हैव टू नियरेस्ट इंटीजर इज 9. ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज Kamala divides rupees 10,000 investment between stocks, bonds and gold. Our bond investment is 25% of our gold investment. Okay, this is important. If annual returns are 10% on stocks, 6% on bonds, 8% on gold, and she gains a total of 8,200 in 1 year. There is a specific amount gained from bond. ठीक है. तो if this is the amount, इसको इन्वेस्ट किया है तीन चीजों में. This is stocks, this is bonds, and this is gold. Bond investment is 25% of our gold investment. ठीक है. बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट इस 25% तो ऑफ गोल्ड इन्वेस्ट. तो गोल्ड में आप मान लीजिए वाई है. वाई अमाउंट से ये इन्वेस्ट किया है वाई रुपीज. एंड बॉन्ड्स में हो गया 25%. 25% ऑफ वाई इज बेसिकली 1/4 ऑफ दिस वाई. तो दिस वाई बाय 4. ठीक है. एंड रिमेनिंग इज इन स्टॉक्स. तो आप स्टॉक्स को एक्स भी मान सकते हैं. और इफ यू वांट टू अवॉइड द टू सेकंड वेरिएबल, इसको सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं कि 1,000 माइनस 1.25 वाई. लिख देता हूँ मैं. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है. अच्छा, और इसमें रिटर्न्स कितना है वो भी देख लेते हैं. स्टॉक्स में आया है 10%. तो 10% रिटर्न मतलब एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया था, इसका 10% गेन हुआ है. तो रिटर्न्स ये हो गया इन्वेस्टमेंट. तो दिस इज 0.1x. 10% मतलब 1/10. 0.1. बॉन्ड्स में 6%. 0.06 इंटू वाई बाय 4. एंड 25% ऑन गोल्ड इन्वेस्टमेंट. सॉरी, 8%. सॉरी सॉरी, माई मिस्टेक. 8% ऑन गोल्ड. ये आ गया 0.08 वाई. इन सब का टोटल आता है आपका 8,200. तो लेट्स पुट इट 0.1x प्लस 0.06 वाई बाय 4 प्लस 0.08 वाई इज इक्वल टू 8,200. ठीक है. यहाँ से नंबर है. अब देखिए नाउ, to make it easy in everything in one variable, I will substitute the value of x with this expression. So 0.1 को इससे multiply करके we'll get it. I will first substitute.
Minus, ये जो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y प्लस वाई वाई बाई फोर इज -5y/4, प्लस दिस इज 0.015 y plus 0.08 y equals to 8200, and this is 0.125 y plus point this is what 0.015 and plus 0.08. This will become 0.95. हाँ 0.095 equals to 8200. अभी ये थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज हो रहा होगा कि ये डेसिमल्स में काफी ज्यादा कैलकुलेशन होगा, तो ठीक है, आई ट्राई टू मेक इट सिंपलर. इस इक्वेशन से फ्रॉम हियर मैं वेरिएबल वाले जितने भी टर्म्स उनको एक साइड लेके जा रहा हूँ, और जो विदाउट वेरिएबल्स हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, आई टेक देम टू वन साइड. So I'll take 8200 this side and all of this to that side. So this will become 0.125 y. ये यहाँ पे ये नेगेटिव है तो उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो उस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज, इसके नीचे आप डेसिमल हटा सकते हैं, 1000 लिख सकते हैं. ये थ्री डेसिमल के बाद थ्री डिजिट्स है तो 1000 हटा लगा सकते हैं नीचे. एंड सेम गोज विद दिस ऑल्सो. ये जीरो जीरो तो इग्नोर कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जीरो है तो इट डजेंट मैटर स्टार्टिंग में. ठीक है. तो यहाँ आपका बचता है आंसर, LHS साइड बिकम्स 1800. आप सब करेंगे तो ये मिलेगा, एंड दिस बिकम्स 125y minus 95y by 1000. So I can write this as 30y by 1000. ठीक है. And this becomes, अब ये इनवर्स हो जाएगा. अब ये 1000 will go up and get multiplied, and 30 will come to the bottom and divide the entire expression. The final expression is like this. So this is 60,000. So the value of y is rupees 60,000. And what y is the amount invested in gold. And what we want is specific amount gained from bonds. So bonds का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, वन फोर्थ ऑफ y which is 15,000. और रिटर्न कितना है, 6%. So gain from y this bonds is, this is the amount that was gained. तो इसी को डायरेक्टली लिख लेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे. पुटिंग इन द वैल्यूज you get, ये इसको डेसिमल हटा देता हूँ 0.06 का. सो आई पुट 100. ये y बाई फोर है तो 1/4 इंटू वाई. ठीक है. सो दिस हैपेंस, जीरो से जीरो गया, बचा 600. इसको आई विल रिड्यूस इट विद 150. फोर से कट करूंगा तो 150 आएगा, एंड फाइनल आंसर इज 900 रुपीज. दिस इज व्हाट वाज गेन फ्रॉम बॉन्ड्स. ठीक है. चलिए, आई होप ये समझ में आ गया हो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस क्वेश्चन सेज मिस्टर पिंटो इन्वेस्ट वन फिफ्थ ऑफ हिज कैपिटल एट 6% SI. ये SI की बात करें, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट. वन थर्ड एट 10% SI, and remainder at
1% SI. The minimum number of years required for his cumulative interest income to equal or exceed his initial capital. ठीक है, जो 6% है, 10% है, या 1% है, दिस इज बेसिकली रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो अगर मिस्टर पिंटो के पास में पी रुपीज थे, इज द प्रिंसिपल अमाउंट और द अमाउंट दैट ही इज इन्वेस्टिंग इन टोटल, तो उसका 1/5 इज 6% SI. तो विच इज P/5 at 6%. This is 1/3 at 10%, and this is 1% at, and the remainder at 1% SI. Okay. तो रिमेनिंग जो बचा है 1% SI. रिमेनिंग बचा कितना है, वो निकालते हैं पहले. तो P माइनस दिस इज P/5 तो चला गया, और माइनस P/3 भी चला गया. तो विल गेट इज 15 -3 -5 5 15 इंटू पी. मैंने एलसीएम लिया है और कुछ नहीं किया है, एंड सब्ट्रैक्ट किया इन फ्रैक्शंस को. तो व्हाट विल गेट इज 7p/15. So this amount is 7p. This is p/3. This is 7p/15. ये प्रिंसिपल अमाउंट्स है, ठीक है, जो इन स्कीम्स में लगाए गए हैं. अब इसका इंटरेस्ट इनकम देखते हैं. इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड बाई 100 लगाते हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 लगाना पड़ेगा आपको. ठीक है, सेम फॉर्मूला वी विल यूज इट हियर ऑल्सो. तो इंटरेस्ट ऑन ईच ऑफ दीज फ्रॉम ईच ऑफ दीज स्कीम्स इज, पहले का P/5 इंटू रेट इज 6% इंटू फॉर हाउ मेनी ईयर्स. अरे नंबर ऑफ ईयर्स भी डोंट नो. ठीक है, तो एन ईयर्स ले लेते हैं. प्लस P/3 इंटू 10% इंटू n/100 प्लस 7p/15 इंटू 1 इंटू n/100. अब इसमें कुछ कुछ चीजें आप कॉमन भी निकाल सकते हैं. वो क्या, एक तो पी सब में से आप निकाल सकते हैं कॉमन, एन को भी निकाल सकते हैं, क्योंकि सबके पास सब में सभी टर्म्स में तीनों में है, और 100 को भी निकाल सकते हैं डिवाइड करके. तो ऐसा करने के बाद, एंड दिस शुड बी इक्वल टू पी, क्योंकि उससे बोला है द इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थ्री स्कीम्स और सोर्सेज, द क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट इनकम पे टू इक्वल और एक्सीड द हर इनिशियल कैपिटल. तो इनिशियली, तो इनिशियल कैपिटल मतलब पी, उसको इक्वल कब कर लेगा, पहले इक्वल का देखते हैं. मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स निकालना है तो इक्वल पे देखते हैं. तो कैंसिलिंग आउट पी और फ्रॉम बोथ साइड्स, या मैं एक काम करता हूँ निकाल लेता हूँ कॉमन. P/n/100 आई विल टेक कॉमन. यहाँ बचेगा 6/5, और इधर P/n/100 आई टेकन, तो 10/3 प्लस P/n/100, तो 7/15 इक्वल टू पी. पी से पी कैंसिल. अब इसको आप ऐड कीजिए, एलसीएम तो आपको पता चल जाएगा, एलसीएम इज 15 ओनली. तो दिस बिकम्स 18 प्लस 50 प्लस 7. दिस इज इक्वल टू 1. Now this is what, 75/15. You can cancel it out.
5 से ये 20 is equals to 20 years. ठीक है, तो मिनिमम 20 years will be required. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन प्लीज खुद से भी सॉल्व कीजिएगा, ओनली देन यू विल बी एबल टू लर्न द कॉन्सेप्ट। So Alex invests savings in two parts. Okay, the simple interest on the first part at 15% per annum for 4 years equals the simple interest on the second part at 12% per annum for 3 years. Calculate the percentage of his total savings invested in the first part. तो फर्स्ट पार्ट में कितना इन्वेस्ट किया है वो हमें बताना है। तो लेट्स से ये था पी, इसको फर्स्ट पार्ट में इन्वेस्ट किया उसने P1, सेकेंड पार्ट में इन्वेस्ट किया P2, एंड वी नो P1 प्लस P2 इक्वल्स टू P. This is his, he is the life, his savings. Alex's saving. So first scheme में first part में in simple interest on the first at 15% per annum for 4 years. So P1 into 15 into 4 by 100. ये simple interest है इसका, equals to second part पे for 12% at 12% for 3 years by 100. This is equal. अब इन दोनों में कुछ रिलेशन निकलेगा P1 P2 में, तो वो निकालते हैं। ये 100 से 100 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, 60 P1, ये 15 4 का 60 इज इक्वल्स टू 36 P2। तो P2 इक्वल्स टू 60 बाई 36 P1। सिक्स टेन ज़ा, एक मिनट, सिक्स टेन ज़ा सिक्स, सिक्स ज़ा टू, थ्री ज़ा टू, फाइव ज़ा, तो दिस इज 5/3 P1। P2 इज 5/3 P1। हमें फर्स्ट पार्ट का निकाला है ना, तो वी वांट टू फाइंड आउट P1, सो लेट्स पुट दिस एक्सप्रेशन इन दिस वन। वी गेट P1 प्लस P2 की वैल्यू हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दी 5P1/3 दिस इज इक्वल्स टू P। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट, ऐसे लेने के बाद में यू गेट 3P1 प्लस 5P1/3 इक्वल्स टू P। दिस implies 8/3 P1 इक्वल्स टू P, P1 इक्वल्स टू 3/8 P। अब what you need is की percentage of his total savings invested in the first part. 3/8 of P is basically this is P1 equals to 37.5% of P, and this is the answer also. ये क्या बेसिकली 3/8 को 0.375 लिखा जा सकता है। ये एक फ्रैक्शन डेसिमल परसेंटेज कन्वर्जन टेबल बनती है, अब आप भी बना सकते हैं, एंड थ्रू दैट यू कैन इजीली फिगर आउट कि ये यही होगा। दैट हेल्प्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। मूविंग अहेड। ठीक है, a sum of money compounded annually becomes rupees 625 in 2 years and 625 in 3 years. Find the rate of interest per annum. अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज होना है, क्लियर है। 3 years दे रखा है और 2 years दे रखा है, एंड आपको ये जो दे रखा है, अच्छा ये क्या होगा, बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि ये चीज जो नंबर है ये क्या है, अमाउंट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है। इन दिस केस दिस इज अमाउंट, बोथ ऑफ देम। तो सम ऑफ मनी भी पी, सम ऑफ मनी भी पी, और फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है 625 इन 2 years। ठीक है, 1 + r, रेट ऑफ इंटरेस्ट को r मान लीजिए, 2 years के लिए है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर अमाउंट, दिस इज इक्वल टू 625, 625 इन 2 years and 625 in 3 years।
ठीक है, now again dividing both the sides, so you will get 1, this is 2, dividing 2 by 3, we get, sorry, 2 by 1, we get p times 1 plus r by 100 is equals to 675 by 625, and कैंसिलिंग है 25, अच्छा एंड पी तो कैंसिल हो ही जाएगा, ये नहीं बचेगा, डिवाइड कर लेता आपने, नथिंग विल बचा, 25 25 जा 25 27 जा, r by 100 equals to 27 by 25 minus 1, this 2 by 25, and this becomes, if you resolve it, 100 into 2 by 25, so r comes out to be 8%. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A certain simple interest rate at a certain simple interest rate, a sum of 13,900 in 3 years, sum amounts to rupees this much in 3 years and this much in 6.5 years. If the same sum was were invested for 2 years at the same rate but compounded every 6 months. Okay, what would be the total interest earned? हम्म, अब देखिए, पहले तो सिंपल इंटरेस्ट से हमें क्या क्या मिल सकता है, पहले तो हमें प्रिंसिपल निकालेंगे। तो कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट में P इंटू आर इंटू टी आपको दे रखा है 3 years एंड 6.5, तो 3/100, दिस इज इक्वल्स टू प्लस पी, सॉरी, प्लस पी इज इक्वल्स टू 3920, एंड नेक्स्ट इक्वेशन इज P इंटू आर इंटू 6.5/100 प्लस पी इज इक्वल्स टू 18960। अब इस यहाँ पे हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं दोनों इक्वेशंस को, एंड व्हाट द रिजल्ट दैट वी गेट इज, सब्ट्रैक्ट करना कुछ नहीं है, बड़ी बात नहीं है। अब ये लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये पार्ट। यू सी दिस विल बिकम माइनस टाइम्स पी इंटू आर इंटू 3.5/100 इज इक्वल्स टू 5040। ये माइनस माइनस साइन आप कैंसिल कर दीजिए, एंड पी आर इज इक्वल्स टू, ये 100 उधर उधर चला जाएगा, ये हट गया, इंटू 5040,
तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई कीजिए। कम्स आउट विथ 144000। अब इससे आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। पुट दिस इन एनी ऑफ द अबव इक्वेशन, इसमें डाल दीजिए, किसमें भी डाल दीजिए। मैं फर्स्ट वाले में डाल रहा हूँ, बट यू आर फ्री टू चूज एनीथिंग। तो पुटिंग इन, आई गेट 144000 ये पी आर की वैल्यू है, इंटू 3/100 प्लस पी इक्वल्स टू 3920। Taking out, this comes out, this is 4320। So this is 9600 रुपीज। तो प्रिंसिपल 9600 आ गया, एंड रेट समर इंटरेस्ट है 2%, द सेम रेट बट कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिड वी फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट? अच्छा, ये निकालना भी पड़ेगा, निकाल सकते हैं। तो रेट will be from this equation, we get 9600, 12, 24 fours are 24 60s are, this is 15% per annum। अब कंपाउंडेड एनुअली है फॉर कंपाउंडेड सेम एनुअली फॉर, बट कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ। तो उसकी वैल्यू निकालनी है, और ड्यूरेशन इज फॉर 2 years। तो P1+R/200 पावर 4। मतलब 4 इसलिए किया क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग, मतलब कितनी बार फ्रीक्वेंस कंपाउंडिंग होगी ड्यूरिंग दिस टू ड्यूरेशन, 2 years ऑफ ड्यूरेशन। तो दैट इज आफ्टर एवरी 6 मंथ, 6 मंथ्स की साइकिल हो गई। इसके बाद इंटरेस्ट रिवाइज, प्रिंसिपल रिवाइज होगा तो इंटरेस्ट भी रिवाइज होगा। तो सच 4 cycles will be there, 4 periods of half year or 6 months will be there across the entire 2 years। ठीक है। नाउ प्रिंसिपल तो वी नो 96,000, sorry 9,600, my mistake। 9,600, 1+15/100 पावर 4। इसकी वैल्यू आती है आपकी 16790। ये पूछा है क्या? टोटल इंटरेस्ट अर्न, व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट अर्न? तो इंटरेस्ट अर्न निकालना है, दिस इज द वैल्यू ऑफ अमाउंट। तो इंटरेस्ट अर्न
is equals to 16790.46 minus principal was 9600. This comes out to be 7190.46. So approximately 7191 rupee. ठीक है, चलिए मूविंग ऑन. दिस सेवेंथ क्वेश्चन अगेन इट्स अ ट्रिक क्वेश्चन. ये मैंने क्विज में नहीं डाला था बिकॉज इसकी कैलकुलेशन कुछ ज्यादा ही लंबी थी, बट यू कैन ट्राई इट आउट. इसको पॉज कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए. इसका सॉल्यूशन दिस आई एक्सप्लेन लेटर एट दैट, probably in a separate video, because this question was not in the quiz because of the calculation part, but I will discuss it. So let's move on to the next question, which is the eighth question. And it says rupees 10,000 deposited in a bank at 5% for X years. The total maturity amount is then moved to Bank B for 5 years at 6% simple interest. जब डिफॉल्ट पे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, बट अगर नहीं दे रखा तो कुछ भी देगा, बट अगर नहीं दे रखा तो कंपाउंड बाय डिफॉल्ट यू कैन अज्यूम कि इट्स कंपाउंड इंटरेस्ट. If the interest and from bank A and bank B are in the ratio of 10 to 13, find the value of X. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप क्या है कि पहले 10,000 रुपए बैंक ए में एट 5% सिंपल इंटरेस्ट फॉर एक्स ईयर्स डाल देगा. ठीक है, सो आफ्टर एक्स ईयर्स इन बैंक ए, not after X years तो पहले तो बैंक ए में किया है ना, तो let's say इंटरेस्ट एस आई इज इक्वल टू 10,000 at 5% per annum to X by 100. So this goes cancel. This is 500X. This is simple interest. The maturity amount would be, maturity के टाइम कितना मिलेगा आपको? 500X तो मिलेगा इंटरेस्ट प्लस जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट किया था, तो प्रिंसिपल इज 10,000. तो अमाउंट इज इक्वल टू 10,000 प्लस 500X. This amount is entirely moved to bank B for 5 years at 6%. So SI will be 5 or 6 years. So this will become, this is 30 तो 0.3, तो 0.3 को आप अगर अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे, so I'm doing the calculation fast but you can resolve it. This will become 3,000 plus 150x. This is simple interest. यहाँ का simple interest 500x.
and the ratio of the simple interest is 10:13. So 500x by 150x plus 3000 is equals to 10/13. This implies 6500x is equals to 1500x plus 30,000. This implies this will go here, get subtracted, so you will get 5000x equals to 30,000 and x equals to 6. So this is 6 years. ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया हो. Moving ahead, so this question says an amount is invested at fixed rate compounded annually if the interest accrued during the second year is this much and interest accrued during the third year is this much. Calculate the interest accrued during the fourth year. अब ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम है, इन द सेंस कि यू हैव टू सी कि ये इन इट इज आस्किंग फॉर इंटरेस्ट अक्रूड ड्यूरिंग द फोर्थ ईयर, नॉट फॉर 4 years बोल रहा है. तो इन सिंगल इंडिविजुअल फोर्थ ईयर कितना है वो आपको बताना है, एंड करस्पॉन्डिंगली द डेटा इज गिवन एज कि फॉर द थर्ड ईयर, फॉर दी सेकेंड ईयर, मतलब उस सेकेंड पर्टिकुलर ईयर में ही कितना इंटरेस्ट अक्रू हुआ है उसकी बात करना है. सो ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे वो देखिए. इन द सेकेंड, अगर लेट्स से पी अमाउंट था, पी सॉरी पी इज द प्रिंसिपल, तो तो इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर अलोन विल बी कैसे निकलेगा. देखिए आप, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर क्या होगा, ये तो प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर था और कंपाउंडिंग हुई है. तो आफ्टर 1 year अमाउंट फॉर ईयर वन विल बी पी टाइम्स 1 + r/100. ये हो जाएगा, यहाँ पे रेट इज आर एंड पी इज प्रिंसिपल. और यही प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, इन यही अमाउंट विल बिकम द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर. तो P2 इक्वल्स टू A1. एंड इस केस में आप इंटरेस्ट कितना निकालेंगे, आई इंटरेस्ट इज सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाइए. I2 इज व्हाट, P2 इंटू आर इंटू 1 year 1. तो P2 की वैल्यू क्या है ये, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, P टाइम्स 1 + r/100 इंटू r/100 इंटू 1. ये P है, ये R है, ये T है, T1 एंड बाई 100. सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला यूज किया हमने. ठीक है, तो इसको मैं सिंपलीफाई करके लिख सकता हूँ, PR/100 इंटू 1 + R/100. अब देखिए ये 2 है, तो यहाँ पे 1 है. वैसे ही P के लिए क्या हो जाएगा, P3 इज इक्वल टू A2. I3 विल बी इक्वल टू PR/100 1 + R/100 स्क्वायर. ठीक है, अब इनके बारे में आपको इनकी वैल्यूज दे रखी है I2 और I3 की, तो वो यूज कर लेते हैं. तो अपन क्या करेंगे, I3/I2 निकालते हैं. दिस इज, ये कट जाएगा, तो मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, PR/100 1 + R/100 स्क्वायर. फॉर द सेकेंड, ये रेशियो दे रखा है आपको 806.25, 866.72, 866.72, 806.25. अब इसको कैंसिल, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप कैंसिलिंग कर सकते हैं, दिस गॉस विद दिस,
एंड इसकी पावर एक्सपोनेंट्स की का कॉन्सेप्ट यूज करके यू कैन गेट की 1 प्लस r बाई 100 इज इक्वल्स टू दिस पार्ट. This is I'm again using calculator. You can also use because calculation is like that only. This these questions. What this answer is, it is approved for the fourth year. अच्छा, अगर हम इसको न भी कैलकुलेट करें तो कैन वी फाइंड इट आउट फॉर द फोर्थ ईयर क्या होगा. This will be for the fourth year. So बट आपको इसकी भी वैल्यू चाहिए होगी. तो व्हाट विल हैव टू डू इसकी आपको यहाँ से इसको निकालना पड़ेगा. यहाँ पे विल हैव टू पुट द वैल्यू ओवर हियर एंड गेट इट. सो चलिए पुट इट इन दिस आई टू में डालेगा वो थोड़ा इजी पड़ेगा. I2 इज इक्वल टू 806.25. सॉरी फॉर मल्टीपल टाइम स्क्रॉलिंग. थोड़ा सा ऊपर नीचे करने में भी थोड़ा फोकस हट जाता है. सॉरी फॉर दैट. बट व्हाट कैन आई से, देयर इज नो अदर वे. अब यहाँ पे यू कैन पुट दिस वैल्यू. सो यू विल गेट. अब इसकी वैल्यू भी निकाल लीजिए. दिस कम्स आउट टू बी 1.075. ये मैंने कैलकुलेटर यूज करके निकाला है. आप भी ऐसे ही कीजिए बिकॉज दिस कैलकुलेशन इज अ बिट ट्रिकी. अगेन रिमेनिंग वैल्यूज को मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ. दिस कम्स आउट टू बी 750. अप्रोक्सीमेटली 750 आ रहा है. तो अब फाइनल जो मैं एक्सप्रेशन चाहिए यहाँ पे ये इसमें आप इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए. तो यू विल गेट पुटिंग इन द वैल्यूज. तो ये तो हो गया. PR/100 की वैल्यू 750 आ गई. और इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं तो 1.075 क्यूब. So this comes out to be I4 comes out to be 931.72. So approximately 932 rupees. This is what we get. थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा है अदरवाइज कैन सॉल्व इस पे. और हाँ, इसमें ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर वन सिंगल पर्टिकुलर ईयर क्या है. उस कॉन्सेप्ट के बगैर आप इसको नहीं सॉल्व करते. तो प्लीज make sure you know that, or if not, please go through the concept once again and then try solving it. Okay. Now, finally, moving on to the last question of this quiz, and this is a bit tricky question.
So this is Anil borrows rupees 2 lakhs at 8% per annum compounded half yearly. He repays this much at the end of the first year and closes the loan by paying the full outstanding amount at the end of the third year. Okay, total interest paid over the 3 years. तो प्रिंसिपल उसने दे रखा है, प्रिंसिपल इज रुपीज 2 lakhs. Rate of interest is 8%, half yearly, compounded half yearly. और ये 10,320 जो है इट इज बीइंग पेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. ठीक है. तो पहले इस चीज को समझने के लिए कैसे, हाउ टू प्रोसीड फर्दर इन दिस क्वेश्चन. फर्स्ट लेट्स सी कि इसकी वैल्यू, ये जो अमाउंट है, ये जो प्रिंसिपल है, एक साल बाद अगर पे करना होता, जैसे एक साल बाद अगर उसे पे करना होता, या ऐसा कहूँ कि एक साल बाद इसकी वैल्यू क्या होती है एट दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो निकालते पहले. फिर उसमें से उस समय उसने कितना पे किया अनिल ने उस समय, और वहां से कितना पेंडिंग रह गया है, दैट वी कैन फाइंड आउट. ठीक है. तो स्टेप बाय स्टेप. तो अमाउंट निकालते हैं पहले. तो अमाउंट वुड बी, अभी हाफ ईयरली है तो दिस विल हैज टू गो डाउन, हाफ होगा ये, 8/2 हो जाएगा. दिस इज 4%, 4/100. और रेट, ये आपका ड्यूरेशन वुड बी, एक साल में कितनी बार कंपाउंडिंग होगी, हाफ ईयरली है तो 2 बार. ठीक है. तो द आंसर वुड बी 1.04 का स्क्वायर. मीन्स आई एम तो यूजिंग द कैलकुलेटर. आप भी यूज करना चाहे कर लीजिए, क्योंकि मैं कर रहा हूँ तो मैं आई कैन नॉट आस्क यू टू नॉट यूज द कैलकुलेटर. So this comes out to be 216,320. ठीक है. And after at the end of 1 year, what he repays is 10,320. इतने रुपए उसने पे कर दिया एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. तो इसके आफ्टर फॉर 1 year आफ्टर दिस पेमेंट, दिस 10,320 का पेमेंट के बाद है, व्हाट इज द अमाउंट दैट इज बीइंग लेफ्ट. तो पेमेंट कितना हुआ वो लिख लेते हैं यहाँ पे. मतलब बेसिकली इस चीज का मतलब है कि अगर एक साल तक भी, एक साल हो गया आज की तारीख में, आफ्टर 1 year, this is if he pays this entire amount, his loan will be repaid. Nothing to be paid after this amount. तो उस 2 लाख की जो वैल्यू है आफ्टर 1 year, वो ये है. इसको ऐसे भी समझा जा सकता है. पेमेंट उसने किया है 10,320 का. तो रिमेनिंग अमाउंट टू पेड इज इक्वल्स टू 216,320 माइनस दिस मच. तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 206,000, 2,06,000. अब इस पे दिस एंटायर थिंग इज पेड एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर. मतलब इस पे अब फर्दर इसके, इस इस पॉइंट से 2 साल बाद ये पूरा पे हो जाता है. अब 2 साल के बाद इसकी क्या वैल्यू होगी, जो रिमेनिंग अमाउंट है, पहले तो वो निकालिए. तो वैल्यू ऑफ द पेंडिंग अमाउंट आफ्टर 2 years और एट द एंड ऑफ 3 years इज इक्वल टू 206,001 +4/100. और एन क्या आएगा, 4 इसलिए क्या है कि सेमी एनुअली, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है. और एन क्या लेंगे, 2 साल में कितनी बार कंपाउंडिंग होगी, एवरी 6 मंथ्स हो रहा है तो टोटल 4 टाइम्स. तो यहाँ पे 4 आ जाएगा. तो द वैल्यू विल बी
This will be 240,990.86. ये amount after third 3 years, after a complete 3 years or 2 years from this point, whichever way you like to call it, ये उसे पे करना पड़ा। ठीक है, ये उसने पे कर दिया और खत्म कर दिया। तो टोटल पेमेंट उसने कितना किया अभी तक, उसकी जेब से कितना पैसा गया, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 240,990.86 प्लस 10,320, ये भी उसने जो आफ्टर 1 ईयर पे किया था। तो दिस विल बी 251,310.86। ठीक है, और उसे पे कितना करना था, पे तो उसे 2 लाख का करना था, तो जो भी एक्स्ट्रा जो गया इज समथिंग 51,310.86 रुपीज, दैट इज जस्ट इंटरेस्ट। तो दिस विल कम आउट टू 51,310.86, तो अप्रोक्सीमेटली इसको 51,311 कह सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। So this brings us to the end of the quiz 2K solutions, and please keep on practicing these questions. एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए छोड़ रखा है, प्लीज ट्राई दैट एंड शेयर दिस आंसर। आई गेट back to you with that. I'll reply on it. Okay. Pause the questions, solve it on your own, then look for the solution. You might come up with learn something new using these this way, and keep learning, keep practicing. And further जो quizzes आएंगे please उसको भी attempt कीजिएगा. If I have not shared it on YouTube the quiz का link, I'll share it again. I'll share it. Probably मैंने WhatsApp चैनल पे share किया होगा. So till then, hope to see you soon. Again, all the best. Take care.